Hi guys, how are you doing? What are you doing? Nothing, was just looking around for some good food, I can smell it. Oh, you can already smell the good Yeah. food. So, Mohit can already smell the good food. How are you doing, guys? Welcome to our YouTube channel, Work, Travel, Food. What are we doing today? We'll go for some good food around here like pav bhaji, momos and chole kulche. But you forgot to tell them that where we are. We are in Lajpat Nagar right now. It is also named as Pushpa Market. So, we are in the Pushpa Central Market of Lajpat Nagar. It's very famous for its street food. There are a lot of things I can't even name. We can't so name we'll them, sorry. so we'll take you to the in this journey. Come along. You don't have to be scared of the crowd here. Yeah. It's actually fine. It is very normal in Lajpat Nagar. And especially when it's Sunday. Yeah, exactly. So we've chosen a wrong day. I guess we've chosen Sunday. But you can, if you're free on a weekday, you should come here on a weekday. That would be more suggested. Yeah. He's the famous chole kulche wala right in middle of the central market. As you can see right behind me. I am really afraid आज हमें खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई मिलेगा। इतनी भीड़ है भीड़ तो बहुत ज्यादा है। आधा पौना घंटा तो लग जाएगा छोले कुलचे देखते हैं, मिलने but Sunday भी में तो We've है ना। heard a lot about them and let's just see how the taste is. Come with us. मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे को खुशबू आ रही है अच्छे से खाने की। तू देख। तुझे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन 10 मिनट लग गए इसको लेने में तो क्या हो गया? खाना तो टेस्टी मिल रहा है ना? It's not, we have finally managed to get our hands on the chola kulcha. I want to taste it यार। Make it fast. We'll try and we'll let you know how it is. चले मैं Okay. very necessary that you do this वरना स्वाद नहीं आएगा बहुत बढ़िया स्वाद जो मैं अभी चखने वाला हूँ अकेले क्या खा रहे हो? आप भी खाओ भाई पकड़ो ऐसे। पता क्या हो जाएगा पता क्या होगा क्या बताता हूँ क्या होगा खाओ फील आ जाएगी फील आ गई भाई फील आ चुकी है तो फील आने का मतलब है ना A1 है सो व्हेनेवर यू कम टू सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर दिस इज द मस्ट हैव छोला कुलचा right in middle of the market you can ask for Sindhi dry fruits it's very near to Sindhi dry fruits and it is just for 40 rupees only for 40 rupees 40 रुपए में feel है so after having the very tasty छोला कुलचास अब हमारे को क्या करना है अब हमें मोमोज टेस्ट करने हैं फेमस आंटी के तुम्हें खुशबू आ रही है कहीं से बहुत ज़्यादा आ रही है तभी तो बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करो कहाँ से आ रही है इधर से आ रही है आओ भैया हाफ चिकन हाफ वेज हाफ पनीर भाई एक पीस कम लग रहा है इसमें यार मैं खा गया मैं वेट नहीं कर पाया तेरे वजह से सॉरी खड़ So we are outside this very famous Auntie ke momos. It is so hype. I think they were the first ones to ever start momos in Delhi. Now I'm going to have my first bite of this. Great momo momos. is very good. सॉफ्ट कितने हैं ना भाई जेन्युइन now I know why it is different and why people are mad for this. You see the layering of this maida. I think this is the softest momos that I've ever had. It's very soft, it's very juicy, and the chicken quality is very good. Also, the another best part about this momos is that the chutney that you get along. So there are two kinds of chutney that you get with this, and I don't know what all ingredients do they put in this chutney, but this is just amazing. तूने एक पीस खा लिया ना? हाँ लिया। अभी मैं खाऊंगा। खा So चिकन मोमोज हो गया मेरा अब खा पनीर टेस्ट कर मैं भी टेस्ट करूँगा साथ तू खा पहले
ये भी गजब है। गजब है। गजब चटनी के साथ नहीं, लेकिन हमने और जो पनीर मोमोज खाए हैं उसके कंपैरिजन में कैसा है? अच्छा You know, I never पनीर liked- डला हुआ है इसमें एक्चुअली। Exactly. I never liked the concept of paneer momos because most of the places do not really give the best of paneer, but you know they actually put some good paneer inside. And for the vegans who do not, don't eat non-veg, this is the best option. Veg को आप mix कर सकते हो पनीर के लिए। ले भाई खा। है मेरा भाई। है मेरा भाई। Now it's time for veg momos. So I don't like veg momos, but let's see how it goes. आंटी के वेज मोमोज भी बहुत अच्छा है। पहले ही बोला था। This is the first time कि मुझे वेज मोमोज पसंद आया। वेज मोमोज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता, बट दिस व्हाट बैड। देखिए अब हम कहाँ आ गए हैं। हमने मोमोज टेस्ट कर लिए और छोले कुलचे टेस्ट कर लिए। अब हम आए हैं राम लड्डू वाले के पास। द फेमस राम लड्डू वाला इन लाजपत नगर। He's on the main road of the market, and you can just spot him easily. If not, then you can ask anyone, any local person of the market. Exactly in front of Lajpat. Saying his location is he's on the other side of the road, or sometimes he's on the main road. So let's check out how the Ram Laddus are. We finally managed to get तूने एक प्लेट एक्स्ट्रा, तूने एक वो लिए नहीं थे, एक पीस एक्स्ट्रा नहीं लिया था चिकन मोमोज। तूने चिकन मोमोज का एक पीस एक्स्ट्रा नहीं पकड़ो। नॉट डन यार, नॉट डन। मूड ऑफ कर रहा था, मेरा भूख लग रही है और देख के और भूख लग रही है। कर दे दे, अब तो खा लिया। गुड। So we finally got a chance to have these Ram Laddus, very soft and soft from inside, crispy from outside, topped by radish, pudini ki chutney and some imli ki chutney, I guess. And मूली। And radish, that's what radish is. Sorry. Idiot. So last piece left and one last piece left for you. यार चटनी तो कम है। Right? गजब। Gazab. Gazab. Now after having the famous Ram Laddus, we are going to have some authentic Bombay Pav Bhaji. Now there are a lot of people selling those shitty Pav Bhajis in the market itself, but you will get the authentic taste only at Roxy Pav Bhaji Wala.